Viewers, if you looked out the window of the National Capital Region today, the odds are high that you would have seen something similar this morning, a blanket of smog engulfing New Delhi and its neighboring cities. The air quality index in the national capital has breached the 400 mark today, with some pockets in Delhi even crossing the 700 mark, which is hazardous as per the AQI scale. But as you might know quite well, NCR has been plagued with hazardous air quality in the winter season over the last few years. The Commission for Air Quality Management has invoked a set of restrictions under Stage 3 of the Graded Response Action Plan. Construction and demolition have been restricted. Stone crushing and mining associated activities have been prohibited. In Delhi, all primary classes till class 5 have been suspended. Let's just take you straight to the ground to give you a sense of what Delhi and its surrounding region woke up to this morning. The people of the national capital who are continuously suffering and have to breathe in this toxic air year after year. Now we had seen that several precautionary measures are being taken by the Delhi government, but it is too late. Now the national capital is witnessing the AQI level in severe to hazardous category. Now if you talk about the precautions that had been taken, right now I'm standing in front of the smog tower here in the national capital. Now what is the present condition of the smog tower? The smog tower, you can see, is shut down. In the coming days also, the AQI level will continue to remain in the severe and hazardous category. A humongous smog tower here in the national capital, but just like the one in the Connaught Place, this one is also not working. Even the screen here is not working. No data is being collected. No air is being purified as of now. Currently in Anand Vihar, the AQI stands in the severe category, that is at 426. Now at a time when the Delhiites are smoking this noxious air, this two towers in the national capital, one at CP and one here in Anand Vihar, are not working. की तस्वीर को देख करके इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि आप नोएडा को देख रहे हैं, क्योंकि नोएडा की तस्वीर जो है वो पूरे धुंध में ढक चुकी है, या यूं कहें कि प्रदूषण और फॉग के मिश्रण जो स्मॉग बनता है उससे पूरे तरीके से इसकी खूबसूरती और इसके ऊंचे लंबे बिल्डिंगों को ढक दिया गया है। बुजुर्ग लोग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए कई तरह की समस्याएं बढ़ जाती है, जिन्हें सांस संबंधित समस्याएं हैं, जिन्हें फेफड़ों में समस्याएं हैं। The Delhi Environment Minister held a meeting earlier today to discuss the implementation of the GRAP Stage 3. While people of Delhi NCR breathe toxic air, our netas like every year indulge in blame game, even forgetting that they are too inhaling the same poison. Today, the Delhi Environment Minister almost washes his hands off the blame, saying that the situation is not just bad in Delhi, but across the national capital region. पूरे दिल्ली के अंदर ही नहीं, पूरे उत्तर भारत के अंदर इस समय जो AQI का स्तर है, जिस तरह से मौसम ने एक ठहराव लिया है, उससे पूरे उत्तर भारत के अंदर एक ही स्थिति बनी हुई है। दिल्ली में तो बल्कि कई जगहों पे अगर 40 स्टेशन देखें तो 4 की स्थिति थोड़ी ख़राब है, बाकी जगह बाकी अगर NCR के राज्यों से देखें तो उससे बेहतर स्थिति दिल्ली के अंदर है। लेकिन जिस तरह का अभी अनुमान देखा जा रहा है कि अभी जो अगला 15 दिन है वो दिल्ली के लिए काफ़ी क्रिटिकल है। ये सोचना ही बहुत गलत है कि दिल्ली सरकार पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकती है पूरी तरह से, क्योंकि पोल्यूशन का मैटर केवल दिल्ली का है ही नहीं। दिल्ली के अंदर के सोर्सेज हैं, उससे दुगना दिल्ली के बाहर के सोर्सेज से दिल्ली के अंदर पोल्यूशन होता है। तो दिल्ली सरकार अपने स्तर पे, युद्ध स्तर पे काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी के प्रयास का ही परिणाम है कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट जारी की। इस साल 365 में से 200 से ज़्यादा दिन जो है दिल्ली को एयर क्वालिटी अच्छी मिल सकी है। लेकिन अभी भी ये टास्क बना हुआ है कि ये जो 1 नवंबर के बाद से जो ये 10-15 दिन का जो समय है, इसका जो मौसम में जिस तरह से परिवर्तन होता है, इसका और मुझे लगता है कि जो प्रयास हो रहे हैं उसमें और हमें आगे इस पर और हम फोकस करेंगे कि जिससे इसको भी और कंट्रोल किया जाए। कि जितने हालात नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ख़राब हैं, गुड़गांव में ख़राब हैं, फरीदाबाद में ख़राब हैं, उतने तो दिल्ली में भी नहीं है। तो ये बार बार दिल्ली वालों को बदनाम करना जो है वो ठीक नहीं है। जितनी गाड़ियां दिल्ली वाले चलाते हैं उससे ज़्यादा गाड़ियां गुड़गांव के अंदर और ग्रेटर नोएडा के अंदर लोग चलाते हैं, ये बात सब समझते हैं। दिल्ली इकलौता ऐसा राज्य है जिसके अंदर पिछले कई सालों से डीजल जनरेटर बैन है। पंजाब की पराली के तो आंकड़े सबके सामने हैं।
पिछले सालों के मुकाबले पराली जो है पंजाब के अंदर बहुत कम हुई है। मगर केंद्र क्या मदद कर रहा है? केंद्र से पंजाब की सरकार ने कई बार कहा कि आप कुछ पैसा दीजिए ताकि किसानों को सब्सिडी दी जा सके, बट केंद्र जो है हाथ छाड़ देता। क्या केंद्र की कोई जिम्मेदारी नहीं है? The BJPs hit out at the Delhi government over the rise in pollution in the state. Interestingly, the issue of pollution has also created divisions in the India bloc, with the Congress party calling out the Kejriwal government over its failure to curb pollution. पोल्यूशन को कंट्रोल करने का कोई भी एक गंभीर प्रयास नहीं हुआ। दिल्ली के लोगों की इस पोल्यूशन के कारण औसत 12 साल आयु कम हो रही है। अरविंद केजरीवाल जी को भ्रष्टाचार और तरह तरह की पॉलिटिक्स से फुर्सत नहीं है। मास्क का प्रयोग करें, अपने बच्चों को बचाएं। दिल्ली के किस्मत पे जो ग्रहण लगा है अरविंद केजरीवाल रूपी, उसको तो दूर करना ही होगा। पंजाब पे दोष देते थे, आप हरियाणा पे दोष देते थे। आज हरियाणा पराली को खत्म भी कर रहा है और यूज भी कर रहा है, किसानों से खरीद भी रहा है, लेकिन पंजाब में फिर से पराली जलाने के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। तो किसानों को जब तक आप सुविधा नहीं देंगे, पराली का होगा क्या निदान? तो जिम्मेदार सीधे सीधे दिल्ली की प्रदेश सरकार और भारत की केंद्र सरकार दोनों है। करोड़ों लोगों को सौंप दिया गया इस जहरीली हवा को सांस लेने के लिए। भाजपा की सरकार हरियाणा में भी है और दिल्ली केंद्र सरकार भी है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों ने सोच रखा है दिल्ली से कोई मतलब नहीं उनको, क्योंकि अभी चुनाव नहीं है और केंद्र सरकार बैठी यहाँ चुपचाप सोती रही। उसने क्यों नहीं समय से बैठक बुलाई? खतरनाक एक अपराध हो गया है दोनों सरकारों से और दोनों दोषी। Let's take this across to our guest, Harish Khuranna, as BJP spokesperson. Joining us also with us is Gopal Rai from My Right to Breathe. But I first and foremost want to go across to Zishan, hi, the political analyst. Zishan, the question that many are asking is this. At the end of the day, if you look at the heat map, it is primarily from Punjab where maximum amount of stubble burning continues. It may be a problem in Haryana and Uttar Pradesh, but the magnitude of the problem in Punjab is far more than any other northern state. When the Aam Aadmi Party, used to, or Mr. Kejriwal himself used to poke jibes at Captain Amrinder Singh when there was a Congress government, why has the AAP failed so miserably on this front when it is in power itself in Punjab? क्या हो गया? माधव जी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस डिबेट में शामिल करने के लिए। और ये एक पॉल्यूशन का मुद्दा जो है वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली और पंजाब का है। और सबसे बड़ी बात एक यही है कि देखिए हर बात में आम आदमी पार्टी की निशाने पर लेना ये बीजेपी का एक शेवा बना है, उनकी दिनचर्या बन गई। दिन भर और तो कोई काम करना ही नहीं है, बस यही करना है। सबसे ज्यादा देखिए स्टडीज ये भी बता रही है, जैसा कि दिल्ली के मंत्रियों ने भी बताया कि नोएडा में कितनी गाड़ियां चलती हैं, गवर्नमेंट है बीजेपी की। और गुरुग्राम में कितनी गाड़ियां चल रही है, कितना पॉल्यूशन हो रहा है, किसकी गवर्नमेंट है? पी की। बात रही पराली की पंजाब में, तो वो उस पे देखिए पूरी से प्रतिबंध नहीं लगा, लेकिन कितनी कितनी मतलब कर रही है, अभी तक कुछ नहीं हो रहा। लेकिन कितने अत्याचार किए जा रहे हैं पंजाब में भी। रही बात दिल्ली की, तो कुछ बहुत जिम्मेदारी जब वो बीजेपी की भी बनती है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट में वहां प्रधानमंत्री जी हैं, वो भी थोड़ा बहुत कोशिश कर लें। तो मिला के घुमा फिरा कर मतलब जो है आम आदमी पार्टी को आपको मिल नहीं रहा है, मतलब बीजेपी को। अब बीजेपी छोड़िए हमारे साथ इस वक्त जयधर गुप्ता है माय राइट टू ब्रीथ के। जयधर, व्हाट वुड यू लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन ऑफ जीशान? द प्रॉब्लम इज इट्स फाइन, यू कैन ब्लेम द सेंटर एंड सर्टनली दैट सम लेवल दैट मे बी अ वैलिड पॉइंट, बट व्हिच इज द गवर्नमेंट दैट हैज टू कर्ब द फार्म फायर्स इन पंजाब? Is it not the Aam Aadmi Party government? And is it fair to say that it is only BJP targeting AAP for political reasons? Or as citizens, should we stop demanding accountability from parties that are ruling in different states? Madhav, this is a political crisis that's turned into a human crisis. At this point, we are being unable to call this public health emergency the emergency that it is. I just want to remind everybody here that even during 2021, when COVID was at its peak and killed 500,000 people, or 5 lakh people, 17 lakh people, or 1.7 million people died from air pollution in 2021. So I don't know why we are not calling it the public health emergency that it is. As far as the Delhi government is concerned, I don't know what we are hiding behind. We have a 365-day problem.
We don't have a Parali problem that lasts for 3 weeks. We have a 365-day problem. The city has become unlivable. The fact that you keep coming up with a plan year after year, that is just toothless. It's like they're dipping your toe in the water. अच्छा smoke tower लगा देते हैं 23 करोड़ का, वो चला ही नहीं. Not even 1% performance, वो भी अब junk हो गया है. 7 महीने से हमने on ही नहीं किया है. So we can't keep doing these silly things. We have to attack the sources of emissions. Attack at the sources of the emissions. Not do this after effect. What you guys are doing, we will never solve this problem. And in 8 years, if you can't come up with a meaningful plan, which is a round-the-year plan. I don't know what we are doing with this kind of leadership. जवाब दीजिए, We're going nowhere with this kind of स्मॉग टावर लगा देते हैं 23 करोड़ और वो चलते नहीं है. पब्लिक के पैसे को अब लगा तो दिया, और इस एक जगह नहीं, कई जगह पे स्मॉग टावर्स लगे. कोई भी स्मॉग टावर नहीं चल रहा दिल्ली में आज की डेट में. तो इतने सारे एक्सचेकर के पैसे एक तो वेस्ट किए, और ये नहीं कि मतलब किसी तरह से पोल्यूशन को रोका जाए, चाहे व्हीकलर पोल्यूशन हो, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, इस पे 365 days there's a problem. The biggest problem is today that Gopal Rai is being economical with the truth. वो कह रहे हैं कि 200 दिन क्लीन एयर रहा है दिल्ली में, लेकिन जो एनवायरमेंटलिस्ट से अगर आप बात करेंगे, एक्टिविस्ट से बात करेंगे, वो कहेंगे 365 days हालत खराब है दिल्ली में. It's just managing the headlines. That's all we're doing. Zishan. The situation is absolutely grim. People are losing 12 years of their life by breathing. Yes, I want Zishan to respond to that. That question is for Zishan. जी देखिए, एक चीज और भी देखिए ना कि मतलब जो है पावर नहीं काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उन्हें काम करना चाहिए. और बिल्कुल ये दिल्ली गवर्नमेंट की दिल्ली जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी है. जो भी इसमें किसी भी तरह की कोई मामला पॉल्यूशन का है, जबरदस्ती की राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है. मैं ये इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कह दूं कि हाँ बिल्कुल, अगर ये हो रहा है तो बिल्कुल गलत हो रहा है, इसमें तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए. दूसरी सबसे बड़ी बात एक यही है कि ऑयल सिस्टम शुरू किया पूरे हिंदुस्तान में, उसको फॉलो किया किसी गवर्नमेंट ने, मतलब इतना अच्छे तरीके से मतलब ये चीज सिस्टम भी फेलियर था सर. सिस्टम भी फेलियर हो गया. शहर के लिए खुद सरकार ने बंद कर दिया इसको. खुद सरकार ने ये सिस्टम को बंद कर दिया सर. फेल नहीं हुआ सर, लेकिन लोग किसी भी चीज को राजनीति की बताओ. हरीश खुराना, सिस्टम डिड नॉट फेल. Did the odd even scheme fail? Madhav, I agree with Mr. Gupta that today we are in a stage of a health emergency. And सबका कसूर है, सेंटर का कसूर है. We have Haryana government responsible, we have UP government responsible. But my Delhi government is not responsible at all. They want to wash their hands and go into political tourism right now. What Arvind Kejriwal is doing right now in Madhya Pradesh. Today, the Delhi people, I am a Delhi citizen. I required my Delhi CM required the most, but unfortunately he's not in Delhi and doing a political tourism. Till 2 years, since last 2 years, what he used to say, stubble burning is the biggest cause from Punjab. That's the biggest cause of worry in Delhi. Today, he's not talking about stubble burning in Punjab. Reason why? Because Punjab mein government un logon ki hai. But the actual figure, ICAR figure till yesterday, I'll give you a small figure to your viewers. Of 1st November, the figure was 2,684 cases was there of stubble burning in 6 states. Out of that, Punjab was 1921, Haryana was 99, UP was 95, Delhi was 0, Rajasthan was 60, and Madhya Pradesh was 509. And interestingly, Madhav, total Haryana from 15th September till 1st November. This is not my data. ICAR data again. From 1.5 months, total Haryana stubble burning cases was 1296. 1296 in 45 days. And alone on 1st November, Punjab mein Parali was 1921. And still you are saying it's not Punjab, it's Haryana, it's UP. We all know the fact is, during October, November, December, stubble burning gives 47% of Delhi pollution comes from stubble burning, in 47%. Still, we are not taking action. We all know 22% of the cases of his vehicle emissions. In 10 years, only 900 buses have been come in Delhi, electrical buses, which has been given by FAME, that is central government. 700 has come, 200 will be coming in few days. Point is, today you have banned 5 lakh odd vehicles in Delhi due to GRAF 3. But you don't have a public transport. Imagine if Delhi Metro was... I'm going to come back to this. I'm going to come back to this. Harish, please stay with me. These are very important points that you're raising. We're going to discuss this with Zishan as well as with Jayadhar, but we're going to slip into a very quick break. More on this in just a few minutes. Stay tuned.
Welcome back. We're discussing Delhi's air emergency, in fact, the entire NCR's air emergency. And before we went into the break, Zishan Haidar, you heard Harish Khuranna there saying that it's not just about, smog towers failing in the national capital, लेकिन electric buses की बहुत बात हुई है, लेकिन delivery और उसका rollout जो है, उस speed में नहीं हुआ जितनी दिल्ली को जरूरत थी. ऐसा क्यों? बिल्कुल, जो भी चीजें हैं वो सारी कोशिश की जा रही हैं और आपके सामने है सारी चीजें. रही बात हमारे यहाँ यूपी की भी, मैं आपको बात बता दूं, मैं चूंकि यूपी से हूं और ये में भी इलेक्ट्रिक बसेस का क्या है आपको पता है और कितने जो है चीजों धीमे तरीके से पहुंचा रही है. लेकिन दिल्ली को देखते हुए और दिल्ली गवर्नमेंट को देखते हुए क्या ये को पता है इस बात का बिल्कुल अच्छे से कि जो भी गवर्नमेंट काम कर रही है वो बिल्कुल सामने है, उसको भी छुपाया नहीं गया है और कोई भी ऐसा प्रचार नहीं कि कागजों पे या पोस्टर्स पे या बैनर्स पे बस दिखा दिया जाए और जमीनी हद को. दिल्ली गवर्नमेंट की सबसे अच्छी जो है वो यही है कि हर चीज जो है वो सामने है आपके, कुछ भी छुपा नहीं है और सारी चीजें. अब अगर इलेक्ट्रिक बसेस की बात हो रही है तो देखिए कितनी सारी बसेस अभी और आना बाकी है और इलेक्ट्रिक कर देना इतना आसान भी नहीं है जल्दी पूरे, लेकिन फिर भी दिल्ली में देखिए जल्दियों का बंद कर देना. प्रॉब्लम यही है सर कि अभी भी बहुत बसों का आना बाकी है, यही तो प्रॉब्लम है. अभी तक अगर बसेस आती तो शायद इतनी पोल्यूशन होती नहीं. आई वांट हरीश टू रिस्पॉन्ड टू ऑन दैट. See, unfortunately, there is no serious debate in terms of Aam Aadmi Party. This gentleman who is representing the Aam Aadmi Party is not official spokesperson right now. Problem is this: he don't know what the Delhi is. Delhi के लोग क्या face कर रहे हैं? He don't know. He stays in UP. Today, my people, you are from Delhi. Your son, your children, my children is facing this kind of problem. I mean, ये जो हम सांस ले रहे हैं, मर रहे हैं हम लोग रोज के यार. But these people are not serious. They have given example. I'll give you a small example with Madhav. 2 years back, you remember, हमने एक घोल बना दिया है जी, हमने ये कर दिया है जी. What has happened to that? I'll give you a small RTI reply of mine. तो थोड़ा सा केंद्र सरकार कह दीजिए ना कि थोड़ी आप परेशान हो रहे हैं और जरा कुछ बता के वो भी तो कैंपेन में बहुत ज्यादा. Madhav, what is this? What is this? He is saying that the central government should also take initiative. That's his point of view. I'll give you a small example. याद करिए एक घोल बनाने की बात की थी अरविंद केजरीवाल ने. 2 lakh rupees spending on that घोल from Pusa decomposer the capsules. They have spent 68 lakh rupees on that chhidkav and 23 crore rupees on treatment. Whose money is this? Exchequer money. You do a stopgap management of odd even or 50 crore rupees being spent on engine off. All right, we're completely out of time, Harish Khuranna. That's of course a very serious issue of concern that the Aam Aadmi Party has to respond to. But the questions that they are also raising is that at the end of the day, the centre also has an important role. And certainly the point is not this. The point is not political differences. At the end of the day, all citizens are faced with this equally. And whichever government is there, all of them ultimately have to provide for the citizens a safe atmosphere. 12 years of our life expectancy is being cut short because of the pollution for every person residing in Delhi. That's a thought that all have to really ponder about. Harish Khuranna, Zishan Haidar as well as Jayendra Gupta, I'd like to thank all of you for joining us this evening.